1. Turmoil, noun. Afratafri, khalbali, halchal. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. 2. Solidarity, noun. Yekjehti. Unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. 3. Fraught. Bhara hua. Situation or course of action filled with something undesirable. 4. Sober, verb. Hoshmand, Sufi, Sanjida. Make or become sober after drinking alcohol. 5. Confrontation, noun. Jhagda, mukabla karna. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 6. Attrition. Nadamat, chhorne ki, farsudgi. The process of reducing something's strength or effectiveness through sustained attack or pressure. 7. Escalation, noun. Badhawa, tezi, shiddat badhana. A rapid increase, a rise. 8. Devastating. Tabakun, shadid alamnak, hosla shikan. Highly destructive or damaging. 9. Fallout. Natija hai. To express diff opinions about sthfteb angrily. 10. Bleak, adjective. Tarik, rukha. Of an area of land, lacking vegetation and exposed to the elements. 11. Turbulent, adjective. Afratafri se bharpoor, fitna pardaz. Characterized by conflict, disorder, or confusion, not stable or calm. 12. Assertive, adjective. Khud etimad, dawa se kehne wala. Having or showing a confident and forceful personality. 13. Deleterious, adjective. Nuksandeh, muhlik, muzir. Causing harm or damage. 14. Contentious, adjective. Mutanaza, jhagralu. Causing or likely to cause an argument, controversial. 15. Cripple, verb. Langra, apahaj. Cause severe and disabling damage to, deprive of the ability to function normally. 16. Diverge, verb. Bikharna, muntashir hona, gumrah hona. Of a road, route, or line, separate from another route and go in a different direction. Describing the ongoing global turmoil as a perfect storm, UN Secretary General António Guterres said in his speech at the World Economic Forum that cooperation was urgently needed in a fragmented world. This was also the theme of the annual Davos meeting earlier this month. The perfect storm, he maintained, was raging on several fronts, especially economic, with an unfolding cost of living crisis, rising inequality, looming recession, energy crunch, soaring inflation and supply chain disruptions among its many aspects. Yet, when international solidarity was needed most, geopolitical rifts and the deepening North-South divide was undermining efforts to meet global challenges. There is no doubt that the world is at an inflection point and in the midst of an intensely unsettled period. Instability is being engendered by rising geopolitical tensions and global economic volatility. Power shifts continue in an increasingly fragmented international system, with multilateralism under growing stress. Uncertainty is the new normal and the outlook remains troubled. Most assessments by experts paint a picture of unpredictability ahead, with strong headwinds unleashed by competing crises and a multiplicity of interconnected but so far unmet challenges. The World Economic Forum's annual Global Risks Report sees an era of low growth, low cooperation, and low investment, with the cost of living crisis presenting the biggest short-term risk confronting the world right now, and climate change as the biggest long-term threat. It identifies old and new risks which are converging to shape a fraught landscape, and finds that economic warfare has become the norm, with increasing clashes between major powers and geopolitical cooperation eroding. The report makes for sober reading,
even though it expresses the hope that collective and decisive action would help to chart a way towards a more positive, inclusive and stable world. But for now, global stability is nowhere in sight. The major contributory factors to the ongoing geopolitical turbulence and economic disruption are the war initiated by the Russian invasion of Ukraine and continuing US-China confrontation. The Ukraine war, which has had global repercussions, will soon enter its second year, with no negotiated end to the conflict in sight. Russian forces are reported to be readying themselves for a spring offensive. Few, if any, diplomatic efforts are underway for a ceasefire or dialogue, which indicates that a prolonged war of attrition lies ahead. Russian targeting of Ukrainian infrastructure and strikes on key cities have not sapped Kiev's will to resist and fight. Nor has Western unity to help Ukraine weakened. Sophisticated military weapons have been sent to Ukraine to give it a qualitative edge in armaments. In what is described as a major policy shift, Germany and the US now plan to send battle tanks to Ukraine to help it counter Russian offensives. A week ago, the US and NATO indicated supplying a package of heavy weapons to Ukraine. All this suggests an escalation in coming months. With rising geopolitical tensions, a divided and leaderless world is unable to meet global challenges. The war has taken a heavy toll on the global economy, coming as it did on the back of the pandemic and its devastating economic fallout. It has disrupted global supply chains, trade, commodity, and energy markets. The conflict has given rise to soaring food prices, while supply disruptions have intensified inflationary pressures across the world. This has hit poorer, debt-burdened economies especially hard. With major economies struggling to curb inflation, global financial conditions have also tightened. Weak global growth holds the prospect of recession in major economies and beyond. The international economic environment is in a volatile and uncertain state and facing a bleak future. The Ukraine crisis isn't the only challenge to international peace and stability. Another major source of global instability is the turbulent relationship between the US and China, the world's most consequential bilateral relationship and a defining feature of the global landscape today. Relations between them have sunk to a historic low, raising concerns across the world about the advent of a new Cold War. Tensions have ensued in most part from America's policy to contain China's rise, which is being countered by an assertive response from Beijing. The US seeks to reduce dependence on Chinese supply chains and products to decouple its economy from China's. This has involved waging a trade war with Beijing. Guterres describes the risk of decoupling of the world's two largest economies as the Great Fracture. He has often urged both countries to avoid decoupling, which would have deleterious consequences for them as well as the rest of the world. A meeting last October between Presidents Biden and Xi Jinping in Bali, their first, on the sidelines of the G20 summit, raised hopes of a de-escalation of tensions and a move towards a more stable relationship between the global powers. But it did not result in any narrowing of differences over the contentious issues and disputes that divide them, including Taiwan, trade, technology curbs and military postures. Indeed, both sides again spelt out their respective red lines on Taiwan. While Taiwan represents the most dangerous arena of US-China confrontation, tensions are escalating on other fronts too. Washington is engaged in a battle to maintain supremacy in technology. Its national security strategy, unveiled in October 2022, declares the aim is to outpace China in the technological domain. Last October, the U.S. imposed a sweeping ban on American companies from exporting chips and advanced chip equipment to China in order to cripple its semiconductor industry. These export restrictions were the latest in the tech war and were described as the biggest shift in U.S. policy on technology exports to China since the 1990s. Apart from taking this issue to the WTO, China is expected to enhance funding to its semiconductor industry. But it is by no means clear whether Washington will be able to coax its allies to join the restrictions, as the interests of their companies diverge with the U.S. on these unilateral measures. This nevertheless underlines how intense the tech war has become. Of course,
there are other sources of instability in the world. What all of them add up to is a deeply divided and leaderless world which is increasingly falling short of addressing multiple global challenges that are cascading into what Guterres rightly calls an impending perfect storm. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, January 30, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में अपनी तकरीर में जारी आलमी बहरान को एक बेहतरीन तूफ़ान करार देते हुए कहा कि बिखरी हुई दुनिया में ताउन की अशद ज़रूरत है। इस माह के अवाइल में होने वाले सालाना डावोस इजलास का मौजू भी यही था। उन्होंने कहा कि यह बेहतरीन तूफ़ान कई महाजों पर चल रहा है, ख़ास तौर पर माशी, जिसमें ज़िंदगी गुजारने की लागत का बहरान, बढ़ती हुई अदम मसावत, बढ़ती हुई कसाद, तवानाई का बहरान, बढ़ती हुई अफरात-ज़र और सप्लाई चीन में खलल शामिल है। इसके बावजूद, जब बैन अल-अक़वामी यकजहती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जोग्राफियाई सियासी इख्तिलाफ़ात और गहरी होती हुई शुमाल जनूब तकसीम आलमी चैलेंजों से निमटने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर है और एक इंतहाई गैर मुस्तहकम दौर के दरमियान है। बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल तनाव और आलमी माशी उतार चढ़ाव की वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। तेजी से मुनक़सम बैन अल-अक़वामी निज़ाम में ताकत की मुंतकिली जारी है, जिसमें कसीरल जहती दबाव में इजाफा हो रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल नया मामूल है और नुक्ता नज़र परेशान कुन रहता है। माहिरीन के ज़्यादातर जायज़े मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत हाल की तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें मुसाबकती बहरानों और एक दूसरे से जुड़े लेकिन अब तक हल न होने वाले चैलेंजों की कसरत की वजह से शदीद मुश्किलात पैदा होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना ग्लोबल रस्किस रिपोर्ट में कम तरक्की, कम ताउन और कम सरमायाकारी के दौर को देखा गया है, जिसमें जिंदगी गुजारने की लागत का बहरान इस वक्त दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा कलील मुद्दती खतरा है और मौसमियाती तब्दीली को सबसे बड़ा तवील मुद्दती खतरा करार दिया गया है। इसमें पुराने और नए खतरात की निशानदेही की गई है, जो एक खतरनाक मंजरनामे को शक्ल देने के लिए यकजा हो रहे हैं, और पता चलता है कि माशी जंग मामूल बन गई है, जिसमें बड़ी ताकतों के माबैन बढ़ती हुई झड़पें और जोग्राफियाई सियासी ताउन खत्म हो रहा है। रिपोर्ट में इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि इज्तिमाई और फैसला कुन इक़दामात से एक ज़्यादा मुस्बत, जामे और मुस्तहकम दुनिया की जानिब राह हमवार करने में मदद मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आलमी इस्तेहकाम कहीं नज़र नहीं आता। जारी जोग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी खलल में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल यूक्रेन पर रूसी हमले और अमरीका और चीन के दरमियान जारी महाज आराई से शुरू होने वाली जंग है। यूक्रेन की जंग, जिसके आलमी असरात मुरत्तब हुए हैं, जल्द ही अपने दूसरे साल में दाखिल हो जाएगी, जिसमें तनाज़ो का कोई मुज़ाकराती इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक रूसी अफवाज मौसम बहार के हमले के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए अगर कोई सिफारती कोशिशें हो रही हैं तो बहुत कम है, जिससे जाहिर होता है कि जंग बंदी की एक तवील जंग आगे है। रूस की जानिब से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और अहम शहरों पर हमलों ने कैफ की मुज़ाहमत और लड़ाई की ख्वाहिश को ख़त्म नहीं किया है। न ही यूक्रेन की मदद के लिए मगरबी इत्तेहाद कमज़ोर हुआ है। यूक्रेन को असलहे में मियारी बढ़तरी देने के लिए जदीद तरीन फौजी हथियार यूक्रेन भेजे गए हैं। जर्मनी और अमेरिका अब यूक्रेन में जंगी टैंक भेजने का इरादा रखते हैं ताकि उसे रूसी हमलों का मुकाबला करने में मदद मिल सके। एक हफ्ता कबल अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को भारी हथियारों का पैकेज फराहम करने का इंदिया दिया था। ये सब आने वाले महीनों में इजाफे की निशानदेही करता है। बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव के साथ एक मुनक़सम और क़यादत से महरूम दुनिया आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने से कासिर है। इस जंग ने आलमी मईशत को भारी नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि इसने वबाई अमराज और उसके तबाहकुन माशी असरात की वजह से किया था। इसने आलमी सप्लाई चीन, तिजारत, अजनास और तवानाई की मंडियों को मुतासिर किया है।
इस तनाज़े ने खुराक की बढ़ती हुई कीमतों को जन्म दिया है, जबकि रसद में खलल ने दुनिया भर में अफरात ज़र के दबाव को तेज कर दिया है। इसने गरीब, कर्जों के बोझ तले दबी मईशतों को खास तौर पर बुरी तरह मुतासिर किया है। बड़ी मईशतें अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए जिदोजहद कर रही हैं। आलमी मालियाती हालात भी सख्त हो गए हैं। कमज़ोर आलमी नमू बड़ी मईशतों और इससे बाहर कसाद का इम्कान रखती है। बैन-अल-अक़वामी इक़्तिसादी माहौल गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी हालत में है और एक तारीक मुस्तक़बिल का सामना कर रहा है। यूक्रेन का बहरान बैन-अल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए वाहिद चैलेंज नहीं है। आलमी अदम इस्तेहकाम का एक और बड़ा ज़रिया अमरीका और चीन के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हैं, जो दुनिया के सबसे अहम दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और आज आलमी मंजरनामे की एक अहम खुसूसियत है। उनके दरमियान ताल्लुकात तारीख की निचली सतह पर पहुंच गए हैं, जिससे दुनिया भर में एक नई सर्द जंग के आगाज के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। चीन के उरूज को रोकने की अमरीकी पॉलिसी की वजह से ज्यादातर तनाव पैदा हुआ है, जिसका मुकाबला बीजिंग की जानिब से जारहाना रद्द अमल से किया जा रहा है। अमरीका अपनी मईशत को चीन से अलग करने के लिए चीनी सप्लाई चेन और मसनूआत पर इन्हिसार कम करना चाहता है। इसमें बीजिंग के साथ तिजारती जंग भी शामिल है। अंतोनियो गुतेरेस दुनिया की दो बड़ी मईशतों के अलग होने के खतरे को ग्रेट फ्रैक्चर करार देते हैं। उन्होंने अक्सर दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो अलहदगी से गुरेज करें, जिसके उनके साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी मुज़िर असरात मुरत्तब होंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बाली में G20 सरबराह इजलास के मौके पर सदर बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात ने कशीदगी में कमी और आलमी ताकतों के दरमियान ज्यादा मुस्तहकम ताल्लुकात की जानिब पेशकदमी की उम्मीद पैदा की थी। लेकिन इसके नतीजे में ताइवान, तिजारत, टेक्नोलॉजी की पाबंदियों और फौजी पोजीशनों समेत उनको तकसीम करने वाले मुतनाज़ा मामलात और तनाज़ात पर इख्तिलाफात में कोई कमी नहीं आई। दर हकीकत दोनों फरीकों ने एक बार फिर ताइवान के बारे में अपनी अपनी सुर्ख लकीरें बयान की। जहां ताइवान अमेरिका और चीन के दरमियान महाज आराई का सबसे खतरनाक मैदान है, वहीं दीगर महाजों पर भी कशीदगी में इजाफा हो रहा है। वाशिंगटन टेक्नोलॉजी में बालादस्ती बरकरार रखने की जंग में मसरूफ है। अक्टूबर 2022 में जारी होने वाली इसकी कौमी सलामती की हिकमत अमली का ऐलान है कि इसका मकसद तकनीकी मैदान में चीन को पीछे छोड़ना है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अमेरिका ने अमरीकी कंपनियों पर चीन को चिप्स और जदीद चुप आलात बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी थी ताकि इसकी सेमीकंडक्टर सनत को मफलूज किया जा सके। ये बरामदी पाबंदियां टेक्नोलॉजी की जंग में ताज़ा तरीन थीं और उन्हें 1990 की दहाई के बाद से चीन को टेक्नोलॉजी की बरामदात पर अमरीकी पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली के तौर पर बयान किया गया था। इस मामले को WTO में ले जाने के अलावा तवक्को है कि चीन अपनी सेमीकंडक्टर सनत के लिए फंडिंग में इजाफा करेगा। लेकिन यह किसी भी तरह से वाज़ेह नहीं है कि आया वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को पाबंदियों में शामिल होने के लिए राज़ी करने में कामयाब होगा, क्योंकि इन एकतरफा इक़दामात पर उनकी कंपनियों के मफादात अमरीका के साथ मुख्तलिफ हैं। इसके बावजूद ये इस बात की निशानदेही करता है कि टेक्नोलॉजी की जंग कितनी शदीद हो चुकी है। यकीनन दुनिया में अदम इस्तेहकाम के दीगर ज़राए भी हैं। इन सब में एक गहरी मुनक़सम और क़ियादत से आरी दुनिया भी शामिल है, जो मुतअद्दिद आलमी चैलेंजों से निमटने में तेज़ी से नाकाम होती जा रही है, जिसे गुतेरेस ने दुरुस्त तौर पर एक कामिल तूफ़ान करार दिया है। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 30 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.